ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला जो है वो रिंग मास लेते हैं। रिंग के फॉर्म में अगर कोई मास है, ठीक है, तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल on what will be a potential at any point on the axis of that ring mass, ठीक है। so gp at a point on axis of a ring passing through its center, passing through its center and perpendicular to plane of ring। देखिए इसमें सपोज ये मेरा रिंग है, सेंटर इसका ये है, and the axis we are talking about is this. The point under consideration may be this is O, this is P. Distance from center, let it be equal to x या r रखते हैं इसको। अभी यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट मास कंसिडर करता हूँ, ठीक है, ऑफ लेंथ dl, ठीक है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर radius of the circle, let radius of the circle be equal to of the ring be equal to a। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इज दैट ओके? all the points this type of dl mass, mass equivalent to dl length is going to be equidistant from this potential, this point P. Is that okay? Let mass of the ring be m, a radius b, a, radius b a। क्या बेटा, लेंथ लेना था dl ले सकता हूँ। डीए कैसे लेंगे, डीए लेंगे मतलब ए को एक्सटेंड कर रहे हो ना। तो अगर रेडियल एक्सपेंशन हो रहा होता तो फिर हम डीए लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसको ए डी थीटा जरूर ले सकते हैं, ठीक है, बट डीएल के फॉर्म में ही ले लेते हैं, 2 पाई आर में घुमा देंगे, ठीक है। तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा,
mass per unit length will be equal to mass upon length, that is m upon 2 pi a. Therefore, mass of dl length is equal to mass per unit length into into uh, length, that is m upon 2 pi a into dl. Is that okay? Now potential at P due to this uh, mass of dl will be equal to, ये हो गया, आगे बढ़ो. Gp gravitational potential due to dl length of a ring at point P is dv, which is equal to minus g dm upon r. अरे एक काम करते हैं, इसको r नहीं लेते हैं, इसको x ही लेते हैं. ठीक है, सॉरी. That implies dv is equal to, and dm जो है मेरा वो ये मास है. This is dm नहीं, r will be root under a square x is equal to minus g into m by 2 pi a into dl upon root under a square plus x square v as a function of यहाँ पर distance of point from axis is x, no? So we are going to take x will be integral minus gm by 2 pi a root under a square plus x square into dm.
dl will vary from 0 to 2 pi a, ठीक है। और देखो dl पर इनमें से कोई भी डिपेंड नहीं करता, x बेसिकली dl पे डिपेंड नहीं करता है, dl इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। मतलब ये सारे टर्म जो है दे आर कांस्टेंट, वी कैन पुल देम आउट, dl को इंटीग्रेट करेंगे 0 टू 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई है तो ऊपर में सिर्फ 2 पाई आ जाएगा, वी आर गोइंग टू फाइनली हैव gm into 2 pi a upon 2 pi a into, should I add one more step? एक सेकेंड रुको, एक स्टेप खाली और ऐड कर देता हूँ, और वही रहेगा, अगला स्टेप वही रहेगा, डोंट वरी, माइनस जी एम बाई 2 पाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू 2 पाई ए इंटू डी एल, और यहाँ पर आर्गुमेंट लिख लेंगे हम लोग, डी एल इज independent of x. That implies Vx will be equal to minus Gm into 2 pi a upon 2 pi a root under a square plus x square is equal to minus Gm upon root under a square plus x square. Is that okay? No, it will just depend on x. x ज्यादा रहेगा तो ये ज्यादा रहेगा, और कम रहेगा तो कम रहेगा। x इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, यानी एट द सेंटर ऑफ द रिंग क्या होगा, पोटेंशियल माइनस जी एम बाई ए। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेंटर ऑफ रिंग that is V0 will be equal to minus gm upon a, ठीक है। ये दो चीजें हमारे पास आ गई, इनको थोड़ा सा एक b as a function of x looks like minus gm by root under a square plus x square। अभी फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल और फील्ड कैसे रिलेटेड है, माइनस डीवी डी आर, ठीक है। यहाँ पर आर जो है वो एक्स रहेगा, ठीक है। तो माइनस डीवी डी एक्स, वाई का कोई टर्म नहीं है, तो वाई के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 0, और z के रेस्पेक्ट में करेंगे तब भी 0 हो जाएगा क्योंकि z का टर्म नहीं है यहाँ पर, ठीक है। देयरफॉर पोटेंशियल से हम फील्ड निकाल सकते हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड at point P will be minus
dv upon dx, and it will be I cap. एक्सिस आई कैप के अलॉन्ग है इसलिए आई कैप लिया, अदरवाइज आर कैप ले लेते डी आर लिख करके। As axis of a ring is along x axis, there are no components of, या फिर एक काम और कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में लिख लेते हैं, इसको यहाँ पर आर आर कैप लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस डीवी डी एक्स आई कैप। ठीक है, यहाँ से इसमें क्यों ट्रांसफॉर्म हुआ, क्योंकि रिंग का एक्सिस इज लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड देयर आर नो कंपोनेंट्स ऑफ वाई एंड जेड इन पोटेंशियल जीपी इक्वेशन या जीपी फॉर्मूला। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को। नाउ ई वेक्टर जी और जी वेक्टर is equal to minus dv dx I cap, which is equal to minus differential of g capital M root under a square minus plus x square, ठीक है, डिवाइडेड बाय dx, और यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस साइन। ठीक है, ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कर देते हैं उसको, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, जीएमएस कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस हाफ का डेरिवेटिव विथ एक्स ले रहे हैं हम लोग, सो इट इज गोइंग टू बी जी एम इंटू माइनस हाफ इंटू 2x अपॉन रूट अंडर सॉरी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर a square plus x square raised to the power 3 by 2. Are we getting this point? माइनस हाफ है तो माइनस हाफ का माइनस हाफ बाहर आ गया, और माइनस हाफ -1 हो गया, दैट बिकम्स -3/2। उसको डिनोमिनेटर में ला करके हमने a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 लिख लिया, और ये चीजें एज इट इज आ गई, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस एक्स्ट्रा अलग से आ गया, तो दिस बिकम्स इक्वल टू, और ये आई कैप रहेगा, इट बिकम्स इक्वल टू जी एम एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 आई कैप। ठीक है, तो पहला सेट हमारा कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी रिंग से आई थिंक सर्कुलर प्लेट निकाले होंगे, दैट इज व्हाट आई बिलीव। इसमें सीधे सीधे फिर स्फेयर का, स्फेरिकल सेल का निकाल दिए हैं हम लोग। एक और एक्स्ट्रा बीच में कर लेते हैं, एक प्लेट का, सर्कुलर प्लेट का कर लेते हैं, और फिर स्फेरिकल सेल का करेंगे, और फिर उसके बाद सॉलिड का करेंगे, सॉलिड स्फेयर। तो हम चार कर लेते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, चार करेंगे। रिंग से हमारा प्लेट बना, और प्लेट के बाद फिर हम स्फेरिकल सेल करेंगे, स्फेरिकल सेल के बाद हम लोग सॉलिड स्फेयर करेंगे। सेकेंड वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर लैमिना बोलते हैं उसको, या फिर सर्कुलर प्लेट बोल सकते हैं। सर्कुलर लैमिना स्लैश प्लेट। लैमिना का मतलब क्या होता है? प्लेन सरफेस, ठीक है। टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। थ्री डायमेंशन उसमें नहीं, थर्ड डायमेंशन नहीं। Its axis passing through its center and perpendicular to its plane। प्लेन डायग्राम ही बन पाएगा। Nevertheless, we'll draw a diagram over here। सपोज ये मेरा सर्कुलर प्लेट है, लैमिना। इस बाउंड्री के बगैर ज्यादा अच्छा गोला बन, बड़ा बड़ा भी बन। नॉट दिस। चलो, तो बहुत अच्छा तो नहीं बना। अब यार, अच्छा मुझे एक बात बताओ, और ये इंफॉर्मेशन ना थोड़ा सा मुझे व्हाट्सएप कर देना ना प्लीज। हमने जो भी किया अभी डिस्कस, कितना कितना बाकी है इससे, वो चीज मुझे एक बार पिंग कर देना। हाँ मतलब मुझे डाल के रख दोगे तो फिर, क्योंकि
इसको स्मॉल आर ले लेते हैं and thickness of this is equal to dr. The distance of this point from P or center to P may be again taken as x और यहाँ से यहाँ का लेंथ जो होगा, यहाँ मतलब ये सर्कुलर रिंग रिंग जो लिया है मैंने, वहां से इसका डिस्टेंस जो होगा दैट इज गोइंग टू बी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. इज दैट ओके? dr is thickness. लिखते हैं. यहाँ पे मैं थिकनेस को ले लेता हूँ. थिकनेस dr. This separation is अच्छा. इस बीच में बायो के square may be taken as point O. This point at this place may be taken as A. ठीक है. So now the derivation is going to be like mass per unit area being from this area for the plate is mass pi A square mass circular ring of radius r and thickness dr is equal to is dm equal to mass per unit area into area of the ring.
this will be m by pi a square into area of the ring will be circumference of the ring, inner ring into its thickness. Is that okay? Pi pi को ये तो cancel कर सकते हैं. It will become m r dr upon a square. Now, sorry, क्या बेटा? नहीं ना, एलिमेंटल एरिया ले रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि वो वैरी करेगा और उसके वैरी करने के साथ हमारा डिस्टेंस जो है रूट अंडर आर स्क्वायर और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वो भी चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि वो चेंज होगा तो वी हैव टू अकोमोडेट दैट. अगर कांस्टेंट होता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, बट फिर भी एलिमेंटल एरिया तो लेना ही पड़ता हम लोग, ठीक है. यहाँ पर डिपेंडेंसी है तो हमारे पास दो कंस्ट्रेंट है, हम क्यों नहीं छोड़ सकते, ठीक है. नाउ gravitational potential at point P due to this circular ring is part of the plate is dV equal to minus G into dm. Mass is dm of that ring divided by root under a square प्लस एक्स स्क्वायर था, ठीक है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. क्लियर है. रेडियस यहाँ पर आर हो गया एक छोटे वाले रिंग का, और वो आर फिर वैरी करेगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इम्प्लाइज dv इज इक्वल टू माइनस जी. अब ये एक्सप्रेशन को लाके रख लेते हैं इंटू 2m इंटू 2m आर डी आर divided by a square into root under r square plus x square. ठीक है. Now we can integrating the circular ring many circular rings of variable radius between 0 to a will make this circular plate and Gp due to Gp due to each of them
added to make net gravitational potential at P due to plate. ठीक है? This is achieved by integrating equation 1 between zero to three radius 0 to 8. Thus, dv integral 0 to v equal to minus e 2gm achieved by integrating equation 1 between अरे यार मैं बोल रहा हूँ बार बार ये दिस लिखा नहीं हाँ मैं अभी पढ़ रहा था तब भी बोला है कि दिस इज अचीव हाँ लिखते टाइम गड़बड़ हो हाँ, बहुत गलती बोलता कुछ और नहीं my mind had had that but in sync जस्ट ऊपर वाले स्टेटमेंट के ऊपर जो इक्वेशन 2gm rdr upon a square root under r square plus x square इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से r में सॉरी 0 से a में so we are going to have minus 2gm upon a square सॉरी 2gm को नहीं रखते हैं gm खाली रहेगा 2r के साथ आ जाएगा उसकी जरूरत हमें पड़ेगी वहां पे इंटीग्रल 0 to a 2r dr अपॉन रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ठीक है अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा what will be the integration of this we can replace आप बोलो r स्क्वायर को हम एक वेरिएबल से रिप्लेस कर लेते हैं y so it will become dy by root under y plus x square where x is constant और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बिकम y plus x स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट अंडर y plus x square into 2 राइट माइनस हाँ क्या क्या रूट अंडर y plus x square इन और सॉरी 2 रूट अंडर y plus x square ये बात समझ में आ रही है चेंज ऑफ वेरिएबल किया हमने अगर एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पर साइड में मैं लिख दे रहा हूँ चेंज ऑफ वेरिएबल भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर
देखो, लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ठीक है, दैट इम्प्लाइज 2r dr is equal to dy. Is that okay? ये हमने अज्यूम किया बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखा नहीं। differentiating both sides, differentiating both sides, we get dy is equal to 2r dr, ठीक है। Also at r is equal to 0, y is equal to r square plus x square is equal to 0 plus x square is equal to 0. Sorry, x square and at r is equal to a, y will be equal to r square plus x square, that is a square plus x. So मेरा लिमिट चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन का, इट विल नाउ बिकम, लेफ्ट साइड वाले को हम इंटीग्रेट करके डायरेक्टली लिख लेते हैं पोटेंशियल एट एक्स, और पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज नथिंग बट, यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल के रखे हुए हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, माइनस जी एम बाई ए स्क्वायर इंटीग्रल डी वाई बाई वाई, ठीक है, सॉरी रूट वाई, और दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, दिस विल बिकम माइनस जी एम बाई ए स्क्वायर इंटू 2 root y under the limits x square and a square plus x square, ठीक है, क्या हुआ बेटा, 1/√y को करेंगे तो 2√y ही आएगा ना, देखो y रेज टू माइनस हाफ को इंटीग्रेट करेंगे dy, this will become y raised to the power minus half plus 1 divided by minus half plus 1, तो ये रूट अंडर y हो गया और डिवाइडेड बाय 1/2, दैट इज 2√y. इज दैट ओके? ये क्लियर है ना? Thus this becomes minus gm a square multiplied by, तो एक गाड़ी पे थोड़ा सा ध्यान रखना, मुझे टाइम बता देना। आ 40, ठीक, 2√a square plus x square minus x, सॉरी माइनस 2x, ठीक है, 2 को हम बाहर ले सकते हैं, तो इट विल बिकम gm a स्क्वायर, बाहर माइनस साइन रखेंगे तो ये करेंगे, अगर इस माइनस साइन को अंदर लेकर के आए तो x माइनस दिस हो जाएगा, ठीक है, that will not impact our result anyway of
एक्स से बड़ा होगा हमेशा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बाद में आएगा तो ये वैल्यूज होगी खुद ब खुद नेगेटिव हो जाएगी. We may write as gm by a square, sorry, 2gm by a square minus 2gm by a square, so root under a square plus x square माइनस x. ठीक है, ये हो गया मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ग्रेविटेशनल फील्ड हम को dv dx कर लेंगे. लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज. दोनों चीजें साथ साथ होती जा रही हैं. दिस इज गुड. क्या हुआ? इशू. Gravitational field at point P due to this plate will be vector G or G vector is equal to minus dv dr r cap as point P. As point P lies on axis which is along x-axis. Expression does not depend on y-axis and z-axis. Therefore, E vector G is or G vector is equal to minus dv dx I cap. Is that okay? That is equal to minus dv के बदले हम लिखेंगे minus 2gm by a square root under a square plus x square minus x with respect to dx and I cap. इसका डेरिवेटिव जो होगा उसमें ये वाला पूरा फैक्टर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 2m बाई ए स्क्वायर. इसका डेरिवेटिव लेंगे हम लोग तो इट इज गोइंग टू बी बेसिकली अब हमारा ये रह जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x with respect to dx I cap. This is going to give me
2gm a स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा और 2x अपॉन 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 1। Are we getting this point? समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? So I cap will again be 2gm by a square, ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस दिस, ठीक है, अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये नंबर जो होगा दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन 1, ठीक है ना? तो वी मे राइट इट एज, एक माइनस साइन यहाँ पर लगा ले, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है? x by root under a square x square, it is also going to be equal to, देखिए ये जो a है पॉइंट P पर जो एंगल बना रहा, सपोज फाई एंगल है, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी, ये 90 डिग्री रहेगा, किसी भी पॉइंट से P को कनेक्ट करेंगे तो ये O, ये पॉइंट और P, दिस एंगल व्हाइट वाला लाइन और ब्लू वाला लाइन के बीच में एंगल इज ऑलवेज गोइंग टू बी 90 डिग्री। रिंग ऐसे रखा हुआ है, ये एक्सिस है, इसका कोई भी रेडियस जो होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, राइट? तो ये लाइन ज्वाइनिंग जो होगा दैट इज गोइंग टू बी हाइपोटेन्यूज। तो a square root under a square by x, sorry, root under a square plus x square is hypotenuse, ये बेस है, right? So we can also write it as cos theta या cos phi, ठीक है ना? So this can be written as 1 minus cos phi I cap, ठीक है? यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर देता हूँ so that it will be there for reference। बताओ देखिए O से एक्सिस जो है मेरा वो ऐसे है, यहाँ पर मेरा पॉइंट P है ना, यहाँ पर कोई भी रेडियस हम लेते हैं, मान लीजिए ये रेडियस, दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, 3D है, यहाँ पे नहीं लग रहा है परपेंडिकुलर, बट इट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, यस, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये A है, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, लेट अस कॉल दिस पॉइंट A, ये O और ये P, तो OA is perpendicular to OP, क्या बेटा? यहाँ पे क्या, नहीं वो रिंग वाले में यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, इस पॉइंट को हम ये ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा 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 अच्छा, समझा 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 समझा, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, रेड में लिया, तो ये बी हो जाए, आई शुड राइट दिस एज बी, OB is perpendicular to OP
और ये एंगल अगर फाई है एंड दिस इज एक्स ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स cos phi will be equal to x upon root under a square plus x. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा vx will be equal to minus 2gm a square 1 minus cos phi i. ठीक है, अरे vx लिख दिया, सॉरी ई जी वेक्टर और जी वेक्टर. ठीक है, आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में मैं उन दोनों का करूंगा और फिर आगे की चीजें. 4 एप्लीकेशन से चारों को हम लोग मॉर्निंग 9 बजे 9:15. अगर पहले वो आने लगते हैं तो फिर मुझे बता देंगे, बोले तो कॉल कर. हाँ अभी डाल केमिस्ट्री का डाल दिया, बाकी सब डाल दिया.